Hi everybody, this is a video on last 2 months strategy for your board examination ISC 12th. I'll be covering PCM, computers, English. Biology I didn't have in my 12th boards, so I'll not be covering that. Sorry for the commerce stream as well. In this video, subjects preference and the smart study technique that will help you to succeed along with the subject wise strategy, and then the timetable will be covered. Timetable might be different for everybody, but I'll just give you an idea how you can follow. So, before starting with the video, I will give you a small intro of myself. I am Aryushi, sister of Molly, and I gave my boards in 2020. So, I gave all my exams, okay? Do not think that it was a corona year. I gave all my exams and I scored 96.5 percentage in my 12th boards. A lot of you have been asking me about the books recommendation. आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा गाइड्स लेनी चाहिए, मतलब आपको क्या करना चाहिए. मैंने भी अपने 12th बोर्ड्स में oswaal के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा था, प्रैक्टिस करा था, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दीज सैम्पल पेपर्स इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन. ये 10th एंड 12th दोनों में अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट्स में. प्लस इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि माइंड मैप्स, जो कि आपको पूरा चैप्टर का एक अच्छा सा समरी दे देता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है. देन देर इज़ मार्किंग स्कीम दैट इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द एग्जामिनर्स कॉमेंट कि आपको कैसे लिखना है एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दीज oswaal बुक्स एंड यू कैन ऑल्सो बाय these books from the link in the description box. I'll start with English language क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं and you are likely to score really bad if you're not good in composition writing or you're not able to answer the grammar part properly. So, composition ये आपके अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं, like narrative हो गया, then we have argumentative, then short story, one word, राइट ऐसे आपके बहुत सारे हो गए. डिस्क्रिप्टिव. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट टू अटेम्प्ट एंड यू आर कंप्लीटली वेग इन दिस पार्ट, आपको नहीं पता आपको कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको ऐसे लिखना उतना अच्छे से आता नहीं है, द ईजिएस्ट ऑप्शन टू गो विद इज डिस्क्रिप्टिव. But remember, whenever you write your composition, you have to be appropriate. That is what is valued. If you are writing something irrelevant, the reader might be furious after just reading it, because that person wants a perfect essay where everything is answered according to the question. If you are a person who is a debater, then I'll definitely ask you to attempt argumentative because you can present your arguments in a better way. Short stories sometimes risky, but if you read novels, you know how to write storyline and how to maintain that interesting part. And please avoid writing a story that you have read before. It should be an original story. So please avoid that. Then we come to the directed writing part. Formats are the most important things. I have made all the videos of directed writing and proposal writing also. फॉर्मैट्स एक्सप्लेन कर रहा है. आई हैव गिवन सर्टेन एग्जाम्पल्स कैसे आपको लिखना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्ले लिस्ट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज. प्रपोजल राइटिंग में यू हैव टू मेंटेन स्ट्रक्चर. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. देन ग्रामर पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, practice and practice. If you're a person who speaks in English every day, then you are less likely to score bad in this. अदरवाइज अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो एंड यू डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, आप प्रिपोजिशंस रॉन्ग कर सकते हो. देयर माइट बी इशूज़ विद योर वर्बल पार्ट ऑल्सो. आपका जो फ्रेजेस होता है, फ्रेजल वर्ब्स. देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में भी आपको पता है कौन से टाइप्स है. आई हैव मेड एवरी वीडियो, जैसे कि नॉट विद स्टैंडिंग कब यूज़ होगा, बट ऑल्सो ये सारी आपकी चीज़ें जो हैं. देन पैसेज इज़ अ स्कोरिंग पार्ट. कॉम्पोजिशन एंड पैसेज अगर आप अच्छे से कर लोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड. One thing I would like to tell you about the passage part is, whenever you write your précis,
you have to write it within the word limit and do not exceed it no matter what. अगर आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं तो आप कैसे डिवाइड करोगे? आप इसको 20 रोज एंड 5 कॉलम्स में डिवाइड करोगे. आई हैव सीन पीपल डूइंग 10 into 10 and making a mess out of it. So please avoid that, right? And precis should be in your own words. Your own words means you have read the precis 2 times and now you're writing the summary. And there is a question that is asked, you have to write accordingly. Along with that, the answers also should be written in your own words. You might not be aware about this precis thing. I'll just tell you. So when you write the precis, you have to make this box of like 20 rows and 5 columns, right? And this is the rough draft. This should be drawn and written with a pencil. After fitting in all the 100 words, you have to just cut it and start with a new page and make the fair draft. Fair draft is the final one and you can write it with the pen. Okay, so this is what you have to do. Starting with English literature, which is a scoring part, in long answers, there is this well-maintained structure that comprises of why the title is appropriate, and you can write the title is appropriate and intriguing because so and so. Writing about the author and his publications is completely optional. Do not waste your whole time writing about the author, and it should be in 3 to 4 lines minimum, this part and this part. Then theme of the story. The most important part of the whole answer, quotes. Please learn the quotes. These are not the words that are from the advanced vocabulary, but these are something that your teacher has also made you underline. So please learn these quotes, and whenever you write the answer, put relevant quotes. Answer what is asked. I've seen students writing completely the summary of that particular story. For example, there was a story, Fritz. The question was about the doll, the physical appearance of the doll. The person started writing the entire story. That's not going to fetch you marks. Now paraphrase, I had Tempest. So I used this paraphrase. This is very, very helpful because you get line to line explanation. Workbook, ये जो वर्कबुक है आपकी, ये सिर्फ धूल लगाने के लिए नहीं है, इसको भी आपको पढ़ना होता है. And of course there are questions. Please answer the questions, and you can also look in the summary of the story, then the theme that is written, the conclusion. अगर आप अपनी वर्कबुक खोलोगे then you will come to know कि ये सब भी है apart from question and answers. Coming to physics, chemistry and maths, ये इनमें से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वॉज मैथ्स एंड आई वॉज द वन हु स्कोर्ड 100 इन दिस. ऑफकोर्स मैंने इसमें बहुत मेहनत भी करी थी. सो फॉर मैथ्स आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व लास्ट 20 ईयर पेपर. अगर ज़्यादा हो गया तो 10 ईयर भी कर लो, बहुत है. एंड काफ़ी चीज़ें तो डिडक्ट भी हो गई थी सिलेबस से, सो यू विल बी एबल टू वाइंड अप विद ऑल द पेपर्स इफ़ यू ट्राई इट. जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया, अब इन्हीं 2 टॉपिक्स को अच्छे से करके यू कैन डू मैक्सिमम क्वेश्चंस. आपके जो मैक्सिमम मिनिमम हो गए, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चाहे कोई भी, इतने सारे चैप्टर्स में आपका ये तो आ रहा है. सो उनके लिए स्पेशली जिनने कुछ स्टार्ट नहीं करा है, एंड दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू स्कोर 100, आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे. समटाइम्स यू माइट फेस प्रॉब्लम इन रिलेशन एंड फंक्शन. वो बहुत ईजी चैप्टर है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करो अच्छे से. कोई वीडियो देखो, मैंने भी बनाई है रिलेशन एंड फंक्शंस की वीडियो. बहुत ईजिली आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट इज 1 1 on 2, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव. सो यू कैन वॉच दैट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सैम्पल पेपर्स ऑल्सो इफ़ यू हैव टाइम. oswaal के सैम्पल पेपर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन गो फॉर दैट, राइट. देन आपका मैथ्स में ये है कि कई बार आप स्किप करोगे पोर्शन. प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. इफ़ यू डू दैट, अगर जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन है, ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 or 1.5 पेज. अगर आपने वो क्वेश्चन आधे पेज में एंड कर दिया है, तो कभी कभार ये होता है कि स्किपिंग की वजह से योर मार्क्स आर रिडक्टेड.
These are some minute things that nobody tells you, but I am telling you because मेरे जो teachers हैं उन्होंने बताया था ये चीज़ें. Then chemistry. Physical chemistry is very easy. The chemical kinetics, electrochemistry, solutions, उसके numericals भी बहुत easy हैं. एक बार अच्छे से देख लेना. Inorganic में आपको पूरा learn करना है, समझना है. Organic, reactions, conversions, ये काफ़ी सारे हैं. And trust me, if you do PYQs of 15 years, like 40 to 50% पेपर, 45 to 50% पेपर तो मुझे लगता है कि PYQs से ही आता है. PYQs भी अगर आप कर लोगे तो लास्ट मोमेंट में जो बच्चे वो तो 80+ स्कोर कर लेंगे आराम से. एंड yes, for physics, derivations is something that you have to revise again and again. The diagrams should be neatly made with the help of a pencil. And whenever you make a graph, आपको उसकी labeling भी करनी है, आपको वरना 0 मिलेंगे. Trust me. And in chemistry also, if you are writing the reaction, they should be balanced. बैलेंस नहीं होगे तो इतना अच्छा नहीं है बोर्ड. दे विल गिव यू अ स्ट्रेट 0. न्यूमेरिकल्स इज समटाइम्स टफ, but you can refer to PYQs. You'll get an idea what questions are asked, and they're completely easy. They are really easy because they ask you direct formula based questions. थोड़े बहुत questions आएंगे जिसमें कि you have to do brainstorming, but 95% questions are easy. Important topics video I have posted Ollie's channel, you can watch it. And yes, I was talking about the directed writing playlist and the maths playlist of relations and functions. So that is in my own channel, AB Education Hub. This is my official channel. You can go and watch these videos from that. Okay. Your favorite scoring subject, which is computers. इसमें काफ़ी lenient marking होती है. And the practicals are super easy. अगर आपका output भी नहीं आया, so please do not panic. You will still get full marks. प्लीज़ डू नॉट पैनिक अगर आउटपुट नहीं आया. जो आपके प्रोग्राम्स हैं, आपको पता है कि आपको अच्छे से मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू नो कि कैसे हमें इंस्टेंस वेरिएबल कैसे पुट करने हैं, देन मेथड्स कैसे लगाने हैं. यू नो द फॉर्मेट, राइट. सो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. टॉपिक्स लाइक डी मॉर्गन्स ड्यूअल, बूलियन फंक्शन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, कार्नो मैप्स, लॉजिक सर्किट डायग्राम्स, आपके एंड और नैंड नॉर, ये सारे गेट्स, देन बाइनरी ट्री, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एवरी ईयर पूछे जाते हैं. सो एक बार आप PYQs में भी प्लीज़ देखना, बिकॉज इन थ्योरी पार्ट चांसेस आर देयर कि आपके मार्क्स कटे. प्रोग्राम्स में इफ़ यू मेक 3 मिस्टेक्स देन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड. सो दिस इज़ वेरी लीनियंट. बट थ्योरी में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ट्राई टू गिव टाइम टू कंप्यूटर्स एज वेल. ऐसे मैं सोचो लास्ट मोमेंट में हो जाएगा. Those of you who have maintained a timetable, you can just skip the video and it's over from my side. But for those people who want a timetable, I can suggest you a 5-hour study schedule that you can follow. So देखो, आप Monday to Saturday आप study कर सकते हो. So it will be like you are studying maths every day. Maths आप every day पढ़ो 1.5 hour. And here you can practice the sample papers and the PYQs, right? Then आपका जो chemistry है और physics है, this should be alternate. And make a target. See, write the chapters जैसे कि solutions हो गया, then you have electro, chemistry, ऐसे करके सारे chapters लिख दो एक चार्ट पेपर में. एंड यहाँ पर जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते रहे इसको हाईलाइट कर दो. सॉल्यूशंस डन, हाईलाइटेड. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन, हाईलाइटेड. एंड कंप्लीट दिस चार्ट पेपर. ये पूरा हाईलाइट होना चाहिए. इंग्लिश में भी आप प्लीज़ ऐसे राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट हर रोज प्रैक्टिस करो. एंड द कोड्स ऑल्सो लर्न देम एवरी डे. कंप्यूटर्स you can do in 2 to 3 days, like 1 day out of 3 days, 1 out of 3. It should be dedicated to computer. 1 hour 30 minutes. Okay.
And see, for the last 1 hour, you can just revise each and everything that you have done. Thank you for watching this video. In case you have any doubts or queries, you can comment. And अगर आपको कोई भी specific video चाहिए, आप comment करो. We'll surely make.